Hi friends, this is Dr. M.R. Gadhvi, paper number PH4501, Unit 1, Solid State Physics. In solid state physics, we having a two segment. One is a thermal property and second is the lattice vibration. So let's start with the lattice vibration. Uh, in the previous lecture, rather in the previous semester, we have seen about the lattice, varieties of lattice, that is a Bravais lattice, and later on we had focused on a crystal, type of crystals, Miller planes, X-ray diffractions, reciprocal of lattice, and so on. Uh, in the present lecture, we required a little bit prerequisite regarding the crystal and the lattice. Let me remind you that lattice is a mathematical model through which we can assume or presume about the availability of an atom. तो हमें कुछ एक मैथमेटिकल मॉडल चाहिए जिसके थ्रू हम स्पेस में कोई एक कोऑर्डिनेट चूज़ कर सके जहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल होगा. सो दिस इज़ अ प्योर अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंसेप्ट and that help us to design about the availability of an atom. The second concept come about the basis. Basis is a group of atom. So a group of atom which are periodically repeated in the space, and this periodic repetitions gives us a triggering for the crystal. So in nutshell, lattice plus basis makes a crystal. Very short and very sweet definition. Lattice, that is a mathematical tool about the assumption and presumption of a group of molecule or molecules or atoms in a space, and plus group of atoms. So you can maintain the periodicity in the space, you can visualize the periodicity in the space, and that is what the meaning of the crystal. So lattice plus basis is a crystal. Lattice माने मैथमेटिकल मॉडल, बेसिस माने ग्रुप ऑफ एटम्स. ओके, तो ये कंसेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस ऑल आर द एटम्स. नाउ लेट मी अगेन पुट वन मोर restriction before we start this study. This entire discussion we will be limitized to only solid material, neither for liquid material nor for the gas material. So we will be restrict our entire case study for the solid material. अब solid material की बात करते हैं. So naturally we will be focusing to a two type of a solid. It would be either a crystalline material or it would be the amorphous material या तो non crystalline material. अगर crystalline material रहा है then there is a periodicity of a atom or a group of atoms. लेकिन within this periodicity, within this set structured, within that set crystal, the atoms are not firmly at their bases, but they are doing a small vibrations. As you can look at my very first slides, my title slides, and you can look at here, the atoms do vibrate. If you look at minutely, let us say I am focusing on this atom where my cursor is. So it is moving linearly. Can you see? Three steps: down, middle, up, down, middle, up. Pick up any sky blue atom and they are doing their vibrations. And that vibrations are linear vibrations. Okay. So in solids, we do have a linear vibrations, and that vibrations, as per the Cartesian coordinate system, we do have a three possibility of vibration: vibration along the x-axis, vibration along the y-axis, and vibration along the z-axis. Keep in mind the vibration will be very small, maybe in the micron order and so on. So again put it in a typical definition way: a small vibration of atom across the equilibrium. Do you remember the equilibrium? Equilibrium, that means where the atom is settled, where the potential energy will be minimum.
सो जो बॉन्ड वाला एक हमने कर्व बनाया था, एट्रैक्टिव एनर्जी, रिपल्सिव एनर्जी एंड द समेशन ऑफ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जी, तो वो जो पैराबोलिक कर्व आ रहा था, डी नेचर्ड पैराबोलिक कर्व, सो उसकी जो डीप या तो वैली पॉइंट है, दैट इज़ द stable or the equilibrium position. So a small variation of an atom across the equilibrium in the crystal is termed as a normal modes. तो जहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ वो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा, एज इट शोन इन माय फर्स्ट टाइटल स्लाइड, एंड इट इज़ बेसिकली अ मोशन ऑफ अ कंटिन्यू मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन. सो अगर मैं आयनिक क्रिस्टल की बात करूँ तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, तो इसने ये कंसेप्ट में लिखा है. तो इट इज़ बेसिकली अ मोशन ऑफ constituent ion. Actually, it's independent of motion of a characteristic frequency. Thus, in the normal mode, all ions will be moved with a defined amplitude and the phase. So, अगर ये उसकी vibrations effect है तो ये वाइब्रेशन को हम फोकस कर सकते हैं, वहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी निकल सकती है. अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसके पास एम्पलीट्यूड भी होगा और फेस भी होगा, एंड दिस इज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉर्मल मोड्स. दो टाइप के वेव्स हैं हमारे पास. वाइब्रेशंस है तो पर कंटिन्यूस पर्टर्बेशन और द वाइब्रेशंस इन द मीडियम, सो दैट वुड बी अवर वेव्स. अगर वेव की बात करें तो प्रिंसिपली वी डू हैव टू टाइप्स ऑफ अ वेव. वन इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, अनदर इज अ ट्रांसवर्स वेव. सो इन ट्रांसवर्स वेव वी हैविंग द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट across the direction of motion, whereas in the case of a longitudinal, the direction of a motion and the direction of a travel, they are in the same direction. The orange big line is a direction of a travel, whereas these atoms are do vibrating and they are traveling in the same direction. Now green arrow is showing the mode of vibrations या तो amplitude of vibration. If you look at here, let's say I am starting from here, so this atom is almost stable, now slowly vibrating much better way, much with a larger amplitude, and again it decreases and it is decreases. So you can see that this is a one cycle of a vibrations. यहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, पीक पे पहुँचा, डाउन हुआ और डाउन हुआ. सो दिस इज एंड दिस इज ज़ीरो एंड दिस इज ज़ीरो. तो यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट साइकिल आपको दिखाई देगी, राइट. एंड दिस इज अलोंग द डायरेक्शन. तो ये कौन से लॉन्जिट्यूडनल वेव हुए? लॉन्जिट्यूडनल इज अ साउंड वेव और अ मैकेनिकल वेव. सो कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन, तो यहाँ पे आपको कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन जैसी इफेक्ट दिख रही है. सो द वेव विल ट्रैवल विद द आइडिया ऑफ अ कंडेंसेशन एंड द rarefaction. Whereas in the case of a transverse wave, it's a very good example like a light waves, right, or electromagnetic waves. So there is a perpendicular displacement of atom and molecules across the direction of traveling directions. Okay, so let's go with the same definition ahead. Then let us elastic strain is produced in a system when this such kind of waves is travels in a medium. तो एक आप सोचो कि कोई एक मीडियम है, उसमें से अगर आप साउंड वेव पास कर रहे हो तो लॉन्जिट्यूडनल साउंड वेव माने कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन. तो माने जो मीडियम में से आप पास कर रहे हो वेव, तो वहाँ पे उसके एटम पे वेव की एनर्जी की वजह से स्ट्रेस आएगा एंड दे विल डू स्टार्ट वाइब्रेशन एज द वेव इज़ फोर्सिंग देम और द वेव इज़ गिविंग द एनर्जी टू दैट. So that is the elastic strain will be produced. माने atom will be displaced under the guidance of the wave. अब एटम है वो ज़्यादा दूरी तक तो जा नहीं पाएगा because it's bonded with the another adjacent atom, and therefore they will come back to the certain position. So that's why I'm saying the word they do vibrate. तो कंडेंसेशन रेयरफेक्शन atom is doing vibrations under the guidance of waves when the such elastic waves are passing such longitudinal waves are passing through the elastic medium. इलास्टिक मीडियम में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एटम परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है,
जहाँ से वो डिस्प्लेस हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ वेव फोर्स, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो दिख रहा है इंडिविजुअल एटम का, तो नेचुरली आई शुड यूज़ द वर्ड इलास्टिक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ आई टेक्ड एज अ इलास्टिक स्ट्रेन। वो वापस भी आ जाएगा, जैसे कि रबर को आप थोड़ा खींचो और फिर छोड़ दो तो जितना है उतना ही वापस हो जाएगा। सो दैट इज विल बी अ इलास्टिक स्ट्रेन। स्ट्रेन इज देयर, द चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, चेंज इज देयर, but that is for just under the influence of the forces. But once the force will remove, naturally it will come to its original position. So it's an elastic strain. And the last concept, whatever the mode of vibrations, normal mode of vibration are producing a vibration within a elastic material or the elastic medium or a homogeneous medium like a crystal, and the order of vibrations will produce a certain frequency, and this frequency will be in the order of 10 to the power 3 meter per second. This is almost a equivalent sound velocity or the velocity of a sound. सो 3 कंसेप्ट याद रखना है। क्रिस्टल्स है माने पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी है तो मेरे पास एक सिस्टमेटिक मीडियम है। ये मीडियम ऐसा मीडियम है कि जहाँ पे एटम दे कैन डू वाइब्रेशन अक्रॉस देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन के आसपास वो वाइब्रेट कर सकता है। तो अगर ऐसे वाइब्रेशंस को हम नॉर्मल मोड्स नाम देते हैं। ये नॉर्मल मोड्स वाइब्रेशन किसके जरिए होता है? इट इज़ डूइंग अ वाइब्रेशंस इज अकर बिकॉज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स of a crystals. What are the constituents of the crystals? They are the ions, if it's ionic crystals. Okay, once you have a vibration, so you should have a frequency. This frequency will be order of 10 to the power 3, that is equivalent to the velocity of a sound. And in the, if this is a velocity or the frequency, I do have amplitude and the phase, and this is happening because of the medium is elastic, so the produced strain is also elastic, and we can measure the elastic wave as well. Okay, the next one is, can we think about a model for this thing? क्योंकि जनरली तो हम दो एटम के बीच में स्ट्रेट लाइन के द्वारा बताते हैं कि दिस इज अ टाइट फिट बॉन्ड इज देयर, इट्स नेवर गोइंग टू बी elastic. But now this is gives us the freedom to think of about a model where you can having a vibrations or atom can do vibration, and therefore a concept come across the us, that is a ball spring model. So अगर बॉल सभी बॉल्स को अगर स्प्रिंग के साथ टाइप करो, ऐसा एक विजुअलाइजिंग ड्राइंग आप सोचो, तो हर कोई बॉल है वो वाइब्रेट करता ही रहेगा। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी लोगों के घर में या तो कार में डांसिंग डॉल का डेस्क पे आप एक मॉडल रखते हैं जिसकी हेड में एक स्प्रिंग लगी होती है, और थोड़ा ही वाइब्रेशन आए देन दैट डॉल इज़ डांसिंग एंड हिज हेड इज़ डांसिंग. So such way we have to visualize the atom is tied up with the ball springs, and this all balls are tied up with the springs, and this is in the shape. Let us say अगर सोडियम क्रिस्टल ही मैं सोच लूँ तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ही सोच लूँ, तो ये सब एटम सोडियम और क्लोराइड के हैं एंड दे टाई अप विद द स्प्रिंग. मैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप वो पढ़ चुके हो 11th और 12th में. It has been assumed that the atom at a lattice point, that is a three-dimensional periodic array of balls, are connected with a ideal massless spring. माने spring हमें ऐसी सोचनी है which is a very very less mass, and they are doing almost massless spring, just doing the simple vibrations within the two balls which are connected to them, and perform the vibrations. Since the atoms are assumed as connected by springs, their vibrations will be visualized as a elastic vibration.